आज हम लोग स्ट्रिंग में प्रोग्रामिंग अगेन कंटिन्यू करेंगे एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज टू राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट द नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस. Write a program to input a string and print the number of blank spaces. That's your question for today. So we have to input a string and print the number of blank spaces. Okay. So काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एंड हम लोग को बोला है स्ट्रिंग इनपुट करने. सो लेट्स क्लोज द 9 पार्ट विद दिस. स्ट्रिंग फोग लिखते हैं नाम. Import java dot util dot star class string 4 public static void main scanner sc is equal to new scanner system dot in string s input के लिए, l for length, I for the loop and c equal to 0 for the count. C equal to 0 for the count. ठीक है. So the first thing that we do is ask the user to enter a sentence. String बोल सकते हैं, sentence लिखते हैं. ठीक है. The user gives the sentence in sc.next line and we store that sentence in the variables of string variable s. So s में आ गया. L is equal to s dot length. This gives us the number of characters of the string. For I equal to 0, I is less than L, I plus plus. याद रखेंगे हम लोग. We have done this before. हम आपको बोला था that the index of a string starts from 0 and ends at 1 less than the number of characters. So अगर मेरा number of characters 20 है, then मेरा string का आखिरी index 19 होगा. And that is why we are writing less than L, or we can write less than equal to L minus 1. बट कभी भी लेस देन इक्वल टू एल मत लिखिएगा, वो आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर दे देगा. ठीक है. नाउ वी ऑल्सो नीड अ कैरेक्टर वेरिएबल हियर. char ch is equal to s dot char at I. So we have done all this. This is nothing new to you. हम लोग क्या कर रहे हैं? We are taking a index and we are extracting the character from that index. ठीक है. So हम लोग चेक करते हैं अगर ch is equal to space है. If ch is equal to space, अगर ch जो कैरेक्टर में एक्सट्रैक्ट किया है अगर वो स्पेस है, then c का वैल्यू को वो +1 कर देगा. और else we'll just write c++. दोनों सेम चीज है. c++ लिखो यहाँ या प्लस प्लस सी लिखो या c इक्वल टू c+1 लिखो या आप c प्लस इक्वल टू 1 लिखो. all of these statements are all the same statements. all of these statements are the same. सबका काम है c का वैल्यू को 1 से बढ़ा देना. सबका काम है c का वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देना. नाउ लूप के बाहर हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ स्पेसेस इन द सेंटेंस इज सी. ठीक है. नंबर ऑफ स्पेसेस इज सी. ठीक है. This is a new program. There are 4 spaces. यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ. ठीक है. So the number of spaces in the sentence is 4. ये हम लोग बोलेंगे और थोड़ा अच्छा से लिखते हैं.
there are C spaces in the sentence. ठीक है? This is strings and its application program. There are 6 spaces in the sentence. So this is a much better way of explaining this. All right. ठीक है? So that's your program. अगर आपको पूछना है ये कैसे हुआ है, let me know. Let's move on to the next question. Write a program to input a string and print the number of vowels in it. ये तो हम लोग कर लिया है. Let's move on to the next question. See, again यहाँ आपका एक सिमिलर प्रोग्राम है जहां आपको चेक करना होगा कि डिजिट्स आ रहा है कि नहीं. So let's see. So string 5 स्ट्रिंग इनपुट करना है, लेंथ निकालना है. जरूरी नहीं है क्योंकि आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं डॉट लेंथ. यू कैन डायरेक्टली लाइक राइट एस डॉट लेंथ हियर. जरूरी नहीं आप एल यूज करें. सो वी कैन रिमूव दैट. कभी कभी हमको मांगता है एंड कभी कभी हमको एक से ज्यादा लूप लगता है. सो रादर देन यूज एस डॉट लेंथ वी जनरली यूज एल. तो जरूरत नहीं है ऐसे. बट आप एक एक करके कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. वी डू दिस if I give you a sentence like I am 18 years old as I was born in 2003. ठीक है? So we have 6 characters here. That is a digit. एक और सेंटेंस हो सकता है since I was born in 2003 I am 18 years old now. ठीक है? सो ये आपको सिग्निफाई करता है कि दैट द डिजिट्स कैन कम एनीवेयर. ठीक है? हम लिख सकते हैं एज 2003 was my year of birth. That makes me 18 years old now. So the same meaning, 3 different sentences, same number of digits, but in very, very different places. ठीक है? सिग्निफाइंग कि आपका कैरेक्टर जो आपको ढूंढना है वो कहीं भी हो सकता है. Since the digit can be anywhere, we have to check each and every digit, and to check each and every digit we need to have a loop. ठीक है? So हम लोग एक loop यूज करते हैं which allows us. This loop produces each index of the string, allowing us to access each character and check their properties. करेक्ट? सो यहां क्या है कि यहां हम लोग कैरेक्टर एक्सट्रैक्टिंग द कैरेक्टर फ्रॉम द करंट इंडेक्स. तो आई में जो भी मेरा वैल्यू है वो मेरे लिए इंडेक्स बन के आ रहा है एंड वी आर एक्सट्रैक्टिंग द कैरेक्टर फ्रॉम दैट इंडेक्स. ओके? सो वी हैव टू चेक वेदर द कैरेक्टर इज अ डिजिट. सो I have done this in class 9. So let's just repeat it in a very small manner. अगर मेरा कैरेक्टर है एक डिजिट, सो डिजिट 0 से 9 तक कैरेक्टर्स होता है. Now every character is provided an ASCII value. For example, spaces
spaces are provided an ASCII value of 32. ठीक है, 0 has an ASCII value of 48, 9 has an ASCII value of 57. इसको हम लोग अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज बोलते हैं या इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बोलते हैं. ठीक है, ASCII values. So if a character variable has a character of 1, then ये character का जो भी ASCII value होगा, it will lie between 48 and 57. So that is where we can relate it. So हम लोग बोलेंगे if the character has an ASCII value greater than equal to 48 and if that ASCII value is less than equal to 57, इसके बीच में होना चाहिए. 48 से ज्यादा या इक्वल, 57 से कम या इक्वल होना चाहिए. अगर है तो C++ या प्लस प्लस सी या C इक्वल टू C+1 या C प्लस इक्वल टू 1, इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट लिख दीजिए जो क्या करेगा, आपका C का वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा. कब बढ़ाएगा? ओनली व्हेन द कंडीशन इज ट्रू. तो हम लोग बोले देयर आर C डिजिट्स in this sentence. There are C digits in the sentence. So more or less the structure of the program remains the same. Your logic of the program is changing. यहाँ लॉजिक क्या है कि भाई स्पेस नहीं चेक करना है, हमको चेक करना है कि मेरा आस्की वैल्यू मेरा मैच कर रहा है या नहीं. किससे मैच कर रहा है? रेंज में मैच कर रहा है या नहीं. ठीक है. नाउ ऑब्वियसली कंप्यूटर है, मैथ्स का तरह होता है, इसमें एक दो तरीका और हो सकता है. सो हम लोग ये भी लिख सकते हैं इफ CH is greater than equal to 0 and CH is less than equal to 9. तो जब हम लोग कैरेक्टर से भी हम लोग ये रिलेशन करते हैं, then also the ASCII value is just being compared. अगर हम यहाँ 0 लिख रहे हैं तो 0 का ASCII वैल्यू से ही कंपेयर करेगा CH का ASCII वैल्यू को. ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एल्स. सो ये 9 का ASCII वैल्यू से CH का ASCII वैल्यू कंपेयर करेगा. दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा देन वो इसका मतलब ये है if both condition is true, then the character is a digit. ठीक है, ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये और ये नहीं, ये कंडीशन एंड ये कंडीशन, एंड के आजू बाजू जो कंडीशंस होते हैं उन अगर दोनों ट्रू होते हैं देन द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द स्ट्रक्चर becomes true. ठीक है. So enter a sentence. Being born in 2000 makes me a millennium child and now I am 21 years old. 6 digits in the sentence. Let's do this once more. India got independence in 1947 and it adopted its constitution in 1950. 8 digits. 1 2 3 4 1 2 3 4. Perfect. Please copy. Okay. So if you look at this question, it's again the same question कि input करो, number बताओ इस character का. So since it is almost the same, we are going to copy that structure. We are going to paste it, change the name, and we'll have to check. So what is a capital letter? A capital letter is a letter. This and this. In ASCII terms, this is 65 and this is 90. In ASCII terms, capital A का value 65 होता है and capital Z का value 90 होता है. So if any character has an ASCII value that lies between 65 and 90, we call that, or basically it is a capital letter. So we'll check if it is greater than equal to A and if it is less than equal to Z. आप numbers भी दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है. दोनों में से कोई एक चीज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. It is going to do the same thing. So we'll say there are C capital letters
in the sentence. That's it. I don't think there's any more changes. Just a minute. There we go. So if we run this and we say, I am trying to teach computers, it is going to say that there are 10 capital letters in the sentence. Easy. Now अगर हमको यही चीज बोलता स्मॉल लेटर्स के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग, बस कैपिटल की जगह हम लोग उसको स्मॉल कर देंगे. क्या करेंगे, ये कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए, ये कैपिटल जेड की जगह स्मॉल जेड. कैपिटल ए का आस्की कोड है 97 एंड सॉरी स्मॉल ए का आस्की कोड है 97 एंड स्मॉल जेड का आस्की कोड है 122. इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, if both conditions are true, then the character is a small letter. ठीक है. You have to change the question name or the program name and that's it. So अगर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ एक कर रहे हैं कैरेक्टर सर्च कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि वो कैपिटल स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में लाई कर रहा है या नहीं, उसका आस्की स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में लाई कर रहा है या नहीं. एंड देन दिस इज जस्ट showcase of how easy computer is. It's going to say there are 13 small case letters in the sentence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Just a minute. 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15. There's some problem. Let me just check. Okay, just a minute. This is perfect, no problem. 6, perfect. 6, 2 and 4. ठीक है, 6. No problems here. Please copy.